Good morning, students. Today we discuss differential equation of central orbit. First, we discuss differential equation of central orbit in polar form. Then we do this in quadratic form. Let O be the origin and OX be the initial line. Let at any time t particle be present at point P and the coordinates of point P be r and theta, where theta is the angle which the radius vector r makes with the initial line. Let m be the mass of the particle and F be the central force per unit mass acting on it, directed towards O. F is the central force per unit mass means F represents acceleration. Since the acceleration F of the particle is always directed towards O, therefore particle has only radial acceleration towards O of magnitude F and has no transverse acceleration because radial acceleration is in direction of radius and transverse acceleration acts perpendicular to the radius vector. There is only central force acting on the point P and central force per unit mass is F, which acting towards the fixed point O. So the radial component of acceleration is given here only and transverse component of acceleration is 0. Now equation of motion along the radial direction is, equation of motion आपकी क्या होती है? Force is equal to mass into acceleration. अब आपकी force ये m, ये जो आपका F है, F तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास. तो फोर्स तो कब बनेगा? जब आप उसको m से मल्टीप्लाई करोगे. तो m into f is represent the force. Force is equal to mass. m is the mass. Acceleration, कौन सी acceleration लिखनी है आपने यहाँ? Radial acceleration. Radial acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? d2r by dt2 minus r d theta by dt whole square. Negative sign comes here because the direction of radial acceleration की जो direction है, it is always in the direction of r increasing, and but the central force per unit mass F acts along the direction in which r is decreasing. So that's why negative sign comes here. So m cancel हो गया दोनों तरफ से, तो क्या बचा? d2r by dt2 minus r d theta by dt whole square is equal to minus f. Now equation of motion perpendicular to the radius vector is 0 because there is no transverse component of acceleration. ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी? 1 by r डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर d theta by dt. हम क्या कह रहे हैं कि कोई फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि there is no force perpendicular to the radius vector. So m into this is the component of, yeah, this is the transverse acceleration. M into acceleration is equal to, this force is 0 perpendicular to the radius vector. So derivative of r square d theta by dt is 0. Now derivative is 0. Integrate किया. So this implies r square d theta by dt is constant and say this constant is represented by h. Now let r is equal to 1 by u. r और u में जो रिलेशन है वो हमें क्या लिया? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. Now differentiating equation 4 with respect to t. 4 को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. Then we get dr by dt is equal to minus 1 by u square du by dt. And this can be written as du by d theta into d theta by dt. तो ये क्या बन गया आपका? 1 by u square को आप क्या लिख सकते हो? r square. तो minus r square d theta by dt du by d theta. और ये r square d theta by dt ये क्या है आपका? कांस्टेंट h. तो ये क्या बन गया? minus h du by d theta. Now again differentiating with respect to t, then we get d2r by dt2. You can calculate. Now substituting the value of d theta by dt and second derivative of r with respect to t in equation 1. Equation 1 जो थी आपकी, equation 1 में आपको क्या क्या चाहिए? d theta by dt और d2r by dt की वैल्यू चाहिए. वो वैल्यू हम निकाल चुके हैं. ये वैल्यूज अब हमने क्या करनी है? पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 में हमने पुट किया और कॉमन देखो क्या आ रहा है? x स्क्वायर u स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया. दिस इज इक्वल टू f. सो d2u by d theta 2 means second derivative of u with respect to theta plus u is equal to f upon x square by f upon x square u square. Now this is the required differential equation of central orbit in polar coordinates. ये इक्वेशन आपको याद करनी है. ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये इक्वेशन जो है वो यूज होगी. ठीक है, मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस u इज इक्वल टू f अपॉन x स्क्वायर u स्क्वायर. नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म. अभी तो हमने बात की थी पोलर फॉर्म में, अब हम बात किसमें कर रहे हैं? पैडल फॉर्म में बात कर रहे हैं. देखो क्या है? लेट p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एट p. p जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ है पोल से टेंजेंट तक. देन 1 by p स्क्वायर ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है रिलेशन.
1 by p square is equal to 1 by r square plus 1 by r raised to power 4 into dr by d theta whole square. This relation आप याद रखोगे. Now let 1 by r is equal to u. U और r में relation reciprocal है. Differentiating with respect to theta, with respect to हमने differentiate किया. Then we get minus 1 by r square dr by d theta is equal to du by d theta. Now equation 6 becomes, equation 6 अभी हमने लिखी थी वो u की terms में क्या बन जाएगी? 1 by p square is equal to 1 by r square means u square plus 1 by r raised to power 4 plus into dr by d theta whole square means इसका square तो ये क्या बन गया du by d theta whole square. Now again differentiating equation 7 with respect to theta, you can differentiate it and we get the relation h square by pq dt by dr is equal to f. क्योंकि जो आपका पैडल फॉर्म में जो आपने इक्वेशन लिखनी है पी और आर की फॉर्म में लिखनी है. पी क्या है आपका? पी परपेंडिकुलर फ्रॉम कोड टू द टेंजेंट एट पी और आर तक आपका वही चार्ज चल रहा है. तो मींस ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है कि h स्क्वायर बाय p क्यूब dt by dr is equal to f. And if the law of central force is given, then to determine the central orbit, we use equation 5 and 8. We use ये हम बाद में करेंगे डिस्कस, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. हम